Hello all the students, welcome to ASCAT YouTube channel. Once again, my name is Anil Chaudhary and today we are going to start with a knowledge series. It will be a series of short videos where we will be discussing the most important latest updates, facts and figures, important information. And moreover students, I'll keep giving you my opinions on the various developments as well. I'll keep telling you what has to be spoken in an interview and what has to be avoided. And moreover students, the series will not be limited only up to your GDPI preparation. But I believe that any student who is aspiring to get into the management domain should definitely not miss it, because it will actually help you in developing a very good understanding about the various things, and definitely it will make you more mature in understanding a lot of things. So students, channel को subscribe कर लो, and this series is going to be a big milestone for you people. चलिए students, आज के इस फर्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बजट 2025. डोंट वरी, मैं पूरे बजट पर डिस्कशन नहीं करने वाला हूं. मैं केवल शॉर्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट द बजट. बट सबसे पहले लेट मी आस्क वन क्वेश्चन टू यू. हम अपने घरों का भी बजट बनाते हैं, अपने घरों का भी बजट बनाते हैं, एंड सरकार भी अपना बजट बनाती है. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बजट्स? And in one of the interviews, this question was there. The question was, what is the elementary difference between the budget which we make at our home and the budget which is made by the government? This is my question to you. What is the answer? Chale, I'll tell you what is the basic difference. सबसे important is students difference between the approach. हम जब अपने घरों में बजट बनाते हैं तो we actually plan our expenditure according to our income. लेकिन सरकार जब बजट बनाती है तो गवर्नमेंट प्लान्स इट्स इनकम अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सपेंडिचर. सरकार सबसे पहले ये तय करती है हमें क्या क्या खर्च करना है, कितना करना है, किस में करना है. उसके बाद सरकार सोचती है कि अब ये पैसा कहाँ से लाना है. देन स्टूडेंट्स, घर में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं होता. हमारी इनकम फिक्स होती है, तो दैट इज द रीजन अकॉर्डिंग टू आवर इनकम वी प्लान आवर एक्सपेंडिचर. बट सरकार क्या करती है, इट प्लान्स द इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर. So that becomes the basic difference. Now, when I talk about budget 2025, सबसे elementary question, what was the size of the budget? 2025-26 में सरकार ने जो estimate present किया, how much it is going to spend, so what is that total outlay? What is the amount of that? So that is something which all the students should know. 50.65 लाख करोड़ रुपीस का ये पूरा estimate है. तो कोई आपसे पूछे कि सर बजट का टोटल आउटले कितना था, डू अंडरस्टैंड इट वाज 50.65 लाख करोड़ रुपीस. ओके, 50.65 लाख करोड़ रुपीस, दैट वाज द टोटल आउटले. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, 2013-14 का जो बजट था उस समय स्टूडेंट्स हमारा आउटले होता था लगभग 17-18 लाख करोड़ रुपए का. अब वो बढ़ते बढ़ते 50+ लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है. तो यस, इंडिया इज ग्रोइंग. बट नाउ स्टूडेंट्स, द बिग क्वेश्चन इज आखिर ये पैसा कहाँ से आता है और ये पैसा कहाँ जाता है. तो दो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, और ये दोनों स्लाइड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. दो पाई चार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड आई थिंक इंटरव्यूज में ये आपको बहुत हेल्प करेगा. Students, we do understand the biggest source of revenue for the government is the taxes. But among all the taxes, we need to understand which is the major contributor. The students, if you see the pie chart, you will come to know that majority of the tax revenue comes from income tax, 22%. After that, it is GST, 18%. After that, it is corporation tax, 17%. Corporation tax का मतलब होता है the income tax paid by the registered companies. And then students, 5% excise duty जो कि प्रोडक्शन पे लगता है. कस्टम्स, इसका मतलब है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, 4%. और इसके बाद स्टूडेंट्स नॉन टैक्स रिसिट्स है 9%. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टैक्स रिसिट्स? You people might be knowing that government has got many companies also which are actually known as public sector undertakings, PSUs. इन सब की जो अर्निंग होती है उसमें भी काफी सारा डिविडेंड सरकार को मिलता है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन दिस. एंड देन सरकार ने बहुत लोन भी दे रखा होता है. इवन इंडिया हैज गिवन लोन्स टू सो मेनी कंट्रीज. तो वहां से जो भी इंटरेस्ट आता है दैट एक्चुअली बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस रेवेन्यू.
इसके अलावा सरकार के एसेट्स होते हैं, उस पर रेंटल आता है, लीज आता है, वैसे कोई भी इनकम जो टैक्स के अलावा है that actually comes in this. And then students, you have non-debt capital receipts. You people should understand what is the difference between revenue receipts and capital receipts. Students, जो regular receipts होती है जैसे tax revenue, that actually becomes revenue receipts. But capital receipts का मतलब क्या होता है? ये transactions हमेशा capital nature के होते हैं. I must tell all the students, you people should understand the difference between revenue transactions and capital transactions. You need to understand. The moment you understand the difference between these two, ये भी clear हो जाएगा कि revenue receipts क्या होती है, capital receipts क्या होता है, revenue expenditure क्या होता है और capital expenditure क्या होता है. And now students, if I give you one or two examples here, जैसे for example सरकार ने अपनी कुछ assets को sell किया या आपने किसी कंपनी को disinvest किया, तो वो जो पैसा आएगा that will be known as capital receipts. Okay. Then for example सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, वो लोन जब रीपे हो जाएगा, वापस सरकार के पास आ जाएगा, तो even that becomes a part of non-debt capital receipts. And then students, ये तो है सरकार की टोटल रेवेन्यू, उसके बाद भी एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा है, तो जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ से आएगा? तो यस, 24% मनी विल कम फ्रॉम loans, borrowings and other liabilities. So this pie chart talks about from where the rupee will come. And now students, the big question is, where does the money go? So this pie chart gives the answer. So students, सबसे बड़ा जितना भी टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का होता है उसमें 22% तो स्टेट्स का शेयर होता है. ओके, तो वो स्टेट्स के पास जाएगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर जितना भी और अमाउंट स्टेट्स को ट्रांसफर किया जाता है दैट बिकम्स अराउंड 8%. तो कुल मिलाकर 30% जो पैसा है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के पास चला जाता है. देन स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा बर्डन दैट इज 20% इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, दैट मीन्स डेट सर्विसिंग. यू पीपल डू अंडरस्टैंड, सरकार ने अभी तक जितना भी लोन ले रखा है उन सब पर द गवर्नमेंट विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल. तो वो जो इंटरेस्ट है, यू पीपल डू अंडरस्टैंड, ये जो 50.65 लाख करोड़ रुपीस का टोटल लेआउट है उसका 20%, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10+ लाख करोड़ रुपीस, इतना तो सरकार केवल ब्याज भरती है. अंडरस्टैंड, तो उतना पैसा वहां चला जाएगा. 16% मनी विल गो टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, दैट मीन्स द डेडिकेटेड स्कीम्स रन बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ओके. देन स्टूडेंट 6% मेजर सब्सिडीज में, 8% डिफेंस में, and then you have centrally sponsored schemes. इसका मतलब है ये वो स्कीम्स होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ मिलकर चलाती है. तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और थोड़ा कंट्रीब्यूशन स्टेट का होता है. ओके. एंड देन स्टूडेंट्स, अदर एक्सपेंडिचर, बहुत सारे खर्चे और भी होते हैं, दैट इज 8%. एंड पेंशन अपने आप में भी ओके 4% का कंट्रीब्यूशन पेंशन के लिए होता है. तो स्टूडेंट्स, आप जस्ट इमेजिन करो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा the union government actually pays the pensions as well. So this is where the money goes. I think student, जो भी मैंने डिस्कस किया वो आपको बहुत हेल्प करेगा in understanding the overall budget of the union government. So where actually rupee comes from and where actually rupee goes. And students, stay tuned for more such important updates. Thank you very much.